सो सोशियोलॉजी आमे तीनटा फर्स्ट तीनटा आमे यूनिट देखुले सेइथिरे सोशियोलॉजी इज ए डिसिप्लिन या सोशियोलॉजी इज साइंस and interpreted discipline. Impact of industrial revolution on French revolution on emergence of sociology ये direct questions एमती आसे एवं sociology and its relationship with history, economics, political science, psychology and anthropology ये आप भी questions आसे ये पार्टा यूनिट very important. Similarly second unit भी important कौन ना problems of objectivity and value neutrality कौन issues of measurement in social science, elements of scientific methods, concept, theory and facts, hypothesis, research design, descriptive, explanatory and experimental content analysis. These are also unit. Content analysis also very important. Then techniques of data collection analysis. ये पार्टी देखिए पार्टिसिपेंट एंड क्वाजाई पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कौन इंटरव्यू क्वेश्चनर शेड्यूल केस स्टडी सैम्पलिंग साइज रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी जोंटे स्केलिंग टेक्निक्स ये सब जोटा कि लिकर्ट स्केल ये सब आम देखिए फर्स्ट तीनटा गोटे आमर क्वेश्चंस अच्छी जोटा कि वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस समस्ते ट्राई करिए लिखिया परहैप्स आसीपारे सोशियोलॉजी विदाउट हिस्ट्री इज रूटलेस सोशियोलॉजी विदाउट हिस्ट्री इज रूटलेस and history without sociology is fruitless. This is very important, write it down. Sociology without history is rootless. Sociology without history is rootless, and history without sociology is fruitless. History without sociology is fruitless. Sociology without history is rootless, and history without sociology is fruitless. Is a quote by John Seeley. So यहाँ पर क्वेश्चन एमती आसे सो क्वेश्चन है कि सोशियोलॉजी विदाउट हिस्ट्री इज रूटलेस एंड हिस्ट्री विदाउट सोशियोलॉजी इज फ्रूटलेस elaborate it एमती क्वेश्चंस आसे तुमरो so a quote by John Seeley that highlights the importance of both the past and present in understanding social issues. So basically कहीं ना प्रेजेंट है सोसाइटी सोशियोलॉजी हिस्ट्री है पास्ट सो ये हाईलाइट करते जॉन सेले बेसिकली हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द बोथ प्रेजेंट एंड पास्ट इन अंडरस्टैंडिंग द सोशल इश्यूज इट मीन्स दैट बोथ हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी आर इम्पोर्टेंट प्रेजेंट है सोशियोलॉजी पास्ट है हिस्ट्री आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल इश्यू इन देयर एंटायरिटी जदि सोशल इश्यू को फुल बुझिया चाहिए you need to understand the present as well as the past. You need to understand the present as well as the past. Then या accordingly तुम्हें लिखि पारिबो कि हिस्ट्री रो रिलेशन कोन सोशियोलॉजी सहित या उपरे तुम्हें देखि पारिबो मु गोटे एग्जांपल देकी बुझे देबी तुमरो इकोनॉमिक्स रिलेटेड एटा इजी लिखिया पई आ या रिलेटेड जदि हबो तो मु किछि मटेरियल भी दे देबी तुमको
सो ये गोटे क्वेश्चंस ट्राई कर लिखिया पई मते लागु जे वर्ष या ऊपर क्वेश्चंस आसी पारे सो ट्राई टू राइट इट डाउन देन आउ गोटे क्वेश्चंस जोटा कि यूनिट 1 रो मु देखी थिली ये क्वेश्चंस भी बहुत थोड़ा आसी यूपीएससी रो जोटा कि impact of industrial revolution and French revolution on the emergence of sociology or emergence of sociology as a science. Okay, sociology as a social science. Impact of industrial revolution and French revolution led to the establishment of sociology as a science. This is a questions. This is a questions. सो या जदि आम लेखिया को जीवा कहीं आमर क्वेश्चंस हो पारे 15 मार्क्स रो और 20 मार्क्स रो भी क्वेश्चंस हो पारे 15 मार्क्स रो कि 20 मार्क्स रो क्वेश्चंस हो पारे तो देखिए सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन emerged from the intellectual revolution and enlightenment thoughts just after the French Revolution. फ्रेंच रिवोल्यूशन ईयर है 1789 1789 फ्रेंच रिवोल्यूशन होता और फ्रेंच रिवोल्यूशन पर सोशियोलॉजी डिसिप्लिन एमर्ज है कौटू है इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन एंड एनलाइटमेंट थॉट्स सो इट्स फाउंडेशन लेड बाय फ्रेंच स्कॉलर अगस्ट कम्टे कही पार या कम्ट कही पार तो जोटा कही पार यार फाउंडेशन यही देले August Comte as a positivist science of the society. Sociology को as a positivist माने बेसिकली सोसाइटी को आम स्टडी करि परिबा गोटे नुआ आइडिया दवा सेटा को पॉजिटिविस्ट साइंस कहा जाए एंड स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन कलेक्टिविटी एंड सोशल रिलेशनशिप थ्रू सोशल इंटरेक्शन ये गोटे समाव इंट्रोडक्शन भाया होगा सो सी कौन कले बेसिकली पॉजिटिव साइंस कौन कहूँ कि ह्यूमन बिहेवियर को आम स्टडी करें कलेक्टिवली बहुत सारे लोक गोटे स्टडी करें जमी आम ए स्टडी करुचु आम ए स्टडी करूँ कि 100 लोक एतिक लोक ये टेंडेंसी रोचे स्टडी कर बिहेवियर स्टडी कर सेम वे सी भी ह्यूमन बिहेवियर स्टडी कर फर्स्ट टाइम आइडिया देले कलेक्टिवली एंड सोशल रिलेशनशिप थ्रू सोशल इंटरेक्शन लोक सहित कथबार्ता कर इंटरेक्शन कर सो इट एमर्ज एज ए रिएक्शन टू द मॉडर्निटी capitalism, urbanization, rationalization and expanded methodology with the passage of time expanded methodologically with passage of time so से कौन केमती आसिला बेसिकली ये एमर्ज कहीं किया सो ये रिएक्शन कहा अगेंस्ट थिला मॉडर्निटी धीरे धीरे मॉडर्न जमाना आसिला लोके न्यू आइडिया एमर्ज हला कैपिटलिज्म माने एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ पर्टिकुलर पर्सन पाखे बहुत धन संपत्ति है माने बिकज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन
and also urbanization is also come because of industrial revolution. And rationalization mane the idea of logic and reason, the idea of logic and reason based thought asila. आगु कौन लोक ब्लाइंडली किसी बिलीव करुले एवं क्वेश्चंस पचारिया स्टार्ट कले कहीं कौन एंड द एक्सपांडेड मेथोडोलॉजिकली विथ पैसेज ऑफ टाइम सो दे एक्सपांड कला धीरे धीरे टाइम अनुसार एगुड़ा सब एक्सपांड कला आइडिया. So its emergence coincided with two most significant and landmark social and political revolution. Its emergence coincided with two most significant and landmark social and political revolutions of 18th century. This is very very important. Coincided with 18th century दीटा जिनस होइतला गोटे ला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गोटे ला फ्रेंच रिवोल्यूशन. आफ्टर 1750 इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट होइतला एवं 1789 रे फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्ट होइतला. So this period of history is often described as the period of great transformation. This period of history is referred to as the period of great transformation. Laid the ground for socio-historical factors that led to the realization of the issues such as urbanization, poverty, rights, unemployment, hunger, citizenship. ये धीरे धीरे ये डायमेंशन गुड़ा लोक भाविया को लगिले एवं या ऊपर स्टडी ऑफ द सोसाइटी हैला एंड लेड टू द रियलाइजेशन द नीड फॉर द सिस्टमैटिक स्टडी. सो सोशियोलॉजी आगु नथिला ये धीरे धीरे आसिला ये कॉन्सेप्ट हंगर कौन हंगर को स्टडी करिए केते लोक हंगर अछंती अनएम्प्लॉयमेंट को स्टडी करिया लोक राइट्स कौन पॉवर्टी केते लोक पॉवर्टी अंडर अछंती केते लोक अर्बानाइज्ड अछंती दीज आर ऑल आइडिया धीरे धीरे ताकू स्टडी करिया पे जदि हमें चाहिबा इट नीड्स सिस्टमैटिक स्टडी. दैट इज द रीजन व्हाई सोशियोलॉजी इज ए सोशल साइंस एमर्ज हला एंड इट एमर्ज आइडिया ऑफ कमटे एंड द ग्रेट जोटा कि देखियो 18th सेंचुरी दीटा पॉलिटिकल रिवोल्यूशन थिला जोटा कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन. सो फार देखिबा फ्रेंच रिवोल्यूशन. फार देखिबा फ्रेंच रिवोल्यूशन. सो फ्रेंच रिवोल्यूशन पूर्व सोसाइटी थिला यूरोप रो फ्यूडालिस्टिक सोसाइटी feudal society which overshadowed the 19th century was a landmark event that led to the overthrow of old order of the society. It strengthened the state. It strengthened the state to represent the will of the people, and rejected any form of despotism. And there was a replacement in allegiance to God to an allegiance to state due to emergence of France as one of the most powerful nation state of the 18th century. Despotism माने क्रूरता. या पूर्व जो राजा लोके गोटे आइडिया ऑफ गॉड हिसाब से भावुले से भावुता कि लोकों भितर ये मनोभाव थाए कि ये भगवान गोटे चेहरा पृथ्वी रे. सो
से लोग रेस्पेक्ट कर रेस्पेक्ट जो से तार फायदा भी उठा प्रिविलेज नौ मन इच्छा लोक को शासन कर एंड दैट शासन को रिजेक्ट कले पीपल विल ऑफ द पीपल एनी फॉर्म ऑफ डेस्पोटिज्म को देयर वाज ए रिप्लेसमेंट इन द अलिजेंस टू द गॉड आगु कौन थिला कि भगवान कर ये थिले रिप्रेजेंटेटिव सेईटा को रिप्लेसमेंट ही कले so allegiance to the state को एटा को represent so due to the emergence of France as one of the most powerful nation state of 18th century the grants of new legal rights धीरे धीरे emerge होला idea of separation of power equality before law equal protection of law ये सब idea emerge होला so the grants of new legal rights and new system of inheritance gave people a new perspective to view the society को देखिबार गोटे नुआ नजर आसिला कि लोकंकर किछि राइट्स भी अछि लोकंक से लीगल राइट्स अच्छी लोकंक किछि फंडामेंटल राइट्स अच्छी with greater emphasis on state there is an unprecedented rise of nationalism this is very important concept this is the first time ever the concept of nation emerged the concept of nation emerged means the concept of nationalism emerged which inspired and sparked various other revolutions in other parts of the Europe and the world idea nationalism माने कौन what do you mean by nationalism this is the ideology which believe people should come together stay together having common cultural consciousness having common cultural consciousness या पूर्वर कौन थिला फ्रेंच रिवोल्यूशन पूर्वर सोसाइटी कहले माने कौन राजा सोसाइटी कहले माने कौन प्रिस्ट 2% पीपल 98% पीपल को कंट्रोल करथांती ता माने सेठी सोसाइटी रो डिसीजन किछि नथिला डिसीजन किए नउथिले राजा राजांक मुहरु जहा बाहरिला सेटा फाइनल सेई जो डेस्पोटिज्म को खत्म करा गला एवं न्यू आइडिया सरफेस हला कौन जोटा कि गोटे सोशियोलॉजिकल आइडिया गोटे है डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी दैट इज माने सोसाइटी को स्टडी करहब सोसाइटी भितर कौन कौन थिला जोटा कि आगु जो आइडिया नथिला लोकंक भितर कि सोसाइटी भितर भी एते डिफरेंस अछि काने लोक जानि पार नथिले काने ता भितर कि पशु नथिला रीजन हिला कौन राजा द्वारा सब किछि ड्रिवेन होतला सेटा चेंज हो गला so new idea that surfaced after the role played by the philosopher gave an ideological base to the development of sociology so these revolutionary ideas not only acted as a catalyst to challenge the traditional authority and religiosity but also laid the intellectual framework for the sociology मुझे केमती लिख फ्रेंच रिवोल्यूशन जदि पचारे कि कौन कौन सी हेल्प कला सोशियोलॉजी डेवलपमेंट हबार बेसिकली फ्रेंच रिवोल्यूशन कौन कला लोक नेशनलिज्म क्रिएट कला लोक भितर जोटा कि लीगल राइट्स कथा ये आइडिया आनिला लोक भितर जोटा कि डेस्पोटिज्म एगेंस्ट को चैलेंज करवा डेस्पोटिज्म चैलेंज कर पावर आसला लोक भितर सी जोटा कि स्ट्रेंथ आसला दीज आर ऑल लेड टू द कौन ना गोटे बेस क्रिएट कला जोटा को डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी Similarly, industrial revolution. Industrial revolution all over the world रे start हेतला प्रथम कोठु ना इंग्लैंड रो एंड सही समय ये बिलीव करा होतला कि इंडस्ट्रियलाइजेशन will foster improve the world through enlightened self-interest of the individuals involved in the process was guided by the principle of equality to compete which further broaden the equality of outcomes so basically कहया माने कौन
जिते एठी कौन है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंपोर्टेंस कौन है कैपिटलिज्म को ग्रोथ है कैपिटलिज्म माने कैपिटलिज्म या कैपिटल लोकन पारे इक्विपमेंट है ता फल कौन है इंडिविजुअलिज्म बढ़िला लोके इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन है सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल इन्वॉल्व रहिला एथे एवं सेइठू आमे देखले कि धर मानिने सेम लेवल लोक अछंती सेम काम करूचंती सेम सैलरी ड्रॉ करूचंती ता माने कोन इक्वालिटी क्रिएट हिला सो इक्वालिटी प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी मध्य क्रिएट हला व्हिच ऑल फर्दर बर्डन द इनइक्वालिटी ऑफ द आउटकम्स ता माने कोन इक्वालिटी से जानिले इनइक्वालिटी कोठी हला सेटा भी जानि पाले नै जतले इक्वालिटी जानि परिबो इनइक्वालिटी ऑटोमेटिकली जानि परिबो तो सेही कांसेप्ट एठी आसिला इंडस्ट्रियलाइजेशन दिगो it was instrumental in transformation of simple proletariat proletariats माने जानते तो subsistence based society into a complex occupational divergent urbanized and populous modern society को convert हैला proletariat basically middle class बुझे नहीं प्रीलिटरेट या प्रोलेटरेट बेसिकली बढ़िया अनपढ़ अधा अधा अधूरा पढ़ा लिखा जोटा कि था ओके सो सिंपल प्रीलिटरेट सबसिस्टेंस बेस्ट सोसाइटी थिला जोटा सेटा को ट्रांसफर कला चेंज कला किए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कॉम्प्लेक्स ऑक्युपेशनली डाइवर्जेंट डिफरेंट डिफरेंट ऑक्युपेशन अर्बनाइज्ड एंड पॉपुलस मॉडर्न सोसाइटी द सोशल चेंज वाज ड्रिवन बाय इकोनॉमिक रीजन giving the way to the mass production concept of surplus profitability and it changed the way pre-modern society was aligned it brought new social classes broadened the inequality between them along with rise in intensity of exploitation and dependence was raised जेमिति इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कौन है कैपिटलिज्म क्लास है कैपिटलिज्म जतरे हला ये एक्सप्लोइट कले कहा को वर्किंग क्लास को तापरे कार्ल मार्क्स पिक्चर को आसिले कार्ल मार्क्स कौन कहले ये कैपिटलिज्म इनइक्वालिटी क्रिएट करछि एंड कैपिटलिज्म एक्सप्लोइट करछि द वर्किंग क्लास है ना नहीं तो सोशलिज्म रो कांसेप्ट देले से सोशलिज्म रो कांसेप्ट देले इनिशियली सोशलिज्म कांसेप्ट काहे देले सी कहले देखो खाली किछि लोक पाखरे जो एक्युमुलेट होची वेल्थ सेटा ठीक नुहे wealth should be in a nation wealth should be distributed या every wealth is a right of every individuals ता माने कोन वेल्थ जहाँ भी क्रिएट अच्छी जहाँ भी गोटे कंट्री अच्छी से समस्त अधिकार अच्छी तो गोटे किछि लोके किछि इंडस्ट्रियलिस्ट ताकू यूटिलाइज करि परिबे नाही जेटा को इंटेंसिटी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड डिपेंडेंस राइज हला जेटा कि एबे भी तुमे देखि परछो सो फर्स्ट देखले आमे कोन ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन रो इंपैक्ट देखले देन देखले कोन एठी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तार इंपैक्ट देखले बेसिकली चाहे वर्किंग क्लास भीतर है बट लोक भीतर आइडिया आसला इक्वालिटी कौन इनइक्वालिटी कौन अनएम्प्लॉयमेंट कौन ये सब आइडिया है अर्बानाइज्ड वर्ल्ड ऑक्युपेशनल डाइवर्स सोसाइटी ये सब धीरे धीरे एमर्ज है देन लास्टली आम देखा न्यू इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म so the new industrial capitalism although improved the quality of life but it also led to the creation of urban centers it led to the creation of urban centers population boost बढ़िला obviously urban center create कला population boost कला realization of problems such as exploitation housing problem health issue slum development which became the problems and issues of the sociology so the event that are conducive in transformation of Europe from
pre-modern to modern, along with socio political and economic revolutions are integral to the emergence of sociology. Are integral to the emergence of sociology. It cannot be studied in isolation of the unprecedented transformation. It cannot be studied in isolation of the unprecedented transformation witnessed at the aftermath of the two most significant and landmark events in the industrial French and Revolution. सोशियोलॉजी एमरजेंस रे ये दीटा बहुत बड़ रोल प्ले ये बेसिकली कौन थिला एटा कंक्लूजन पार्ट हम्म कह कौन हम आउ किसी शुणा जाऊँ तो 79 खंडे सीट एड हो पारे बट सियोर नो एक्स्ट्रा अटेंड कथा किसी इनफॉरमेशन नहीं दौले एथर सब बंद कर दीचन कहीं जा सो ये थिला तुम इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन या पर क्वेश्चन आसी पारे तुम्हें जदि एटा को लिखि देथिबो भलसे तार पॉइंट वाइज मन रखि देथिबो तार एग्जाम रे ताको हेल्प करिवो देन आ गोटे क्वेश्चन हला सोशियोलॉजी एंड इट्स रिलेशन विथ इकोनॉमिक्स आमे सोशियोलॉजी एंड रिलेशन विथ हिस्ट्री देखिले sociology and its relation with so economics is defined as the branch of knowledge that deals with all economic aspects of human lives, how goods and services are produced and manufactured, distributed and consumed. कौन ना how goods and services are produced and manufactured and distributed and consumed. So sociology on the other hand, so ये कौन देखु इकोनॉमिक्स बेसिकली ह्यूमन इकोनॉमी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ भी देखु इकोनॉमिक एस्पेक्ट बट सोशियोलॉजी ऑन द अदर हैंड इज बेसिकली डील्स विथ सोशल लाइफ्स ये इकोनॉमिक लाइफ ये हला सोशल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कौन कौन कल्चरल लीगल पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ and the social interaction and relationship involved within it. So basic difference कौन sociology रो social life of human being देखुची economics रो economy life of human beings. सोशल लाइफ रे कौन रोची ना कल्चरल लीगल पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ रोची एंड द सोशल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप इन्वॉल्व. So economic sociology is the application
is the application of sociological concept and methods to analysis the production, distribution, exchange, and consumption of goods and services. And consumption of goods and services. Consumptions of goods and services. So बुझीगला सोशियोलॉजी डेफिनेशन इकोनॉमिक्स डेफिनेशन एंड इकोनॉमिक सोशियोलॉजी कौन ना एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल कांसेप्ट एंड मेथड एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल कांसेप्ट एंड मेथड्स टू एनालाइज द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वन बाय वन देखिवा या ऊपर थिंकर्स व्यूज अछि माने कोन इकोनॉमिक सोशियोलॉजी माने कोन तुमर इकोनॉमिक्स रे चाहे हाउ केते गुड्स और हाउ मच गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड हाउ एंड व्हाट आर द सर्विस टू बी गिवन is decided by the behavior of the society. In a particular society people eat meat and in other particular society people eat veg. So their behavior, their culture, their society is consuming different things. So their economic activities are, that means they are for a vegetarian area, for a non-vegetarian the economic base is different. And their economic activity is also guided by the behavior of the people in a particular area. So सेठी पई को आउची चाहे एनालिसिस हो सोशियोलॉजिकल कांसेप्ट रे जो इकोनॉमिक सोशियोलॉजी कोन ना द प्रोडक्शन हो डिस्ट्रीब्यूशन हो तो सेही अनुसार लेट से गोटे पर्टिकुलर एरिया रे कोस्टल एरिया या भुवनेश्वर रे आईटी तुमे गोटे इंडस्ट्री बनेलो या गोटे आईटी कंपनी बनेलो तुमे एठी चलिबो काने लोके किनिबे काइना एठी सेही अनुसार लोकंकर सेकेंडरी टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी लोक रोचन इनवॉल्व यदि गाँव तुम जब कंप्यूटर दुकान खोल लोक किए आसी नेबेनी कहीं बिहेवियर अलग तो तुम डिमांड तुम सोसाइटी बिहेवियर अनुसार प्रोडक्शन भी हम डिस्ट्रीब्यूशन भी हम एंड एज वेल एज एक्सचेंज और कंजम्पशन भी हम सो ये बेसिकली लिखा हो विदाउट हिस्ट्री या विदाउट नोइंग द सोसाइटी यू कैनॉट बेसिकली रन द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड दैट इज द रीजन व्हाई तुम देखु तो बर्तमान गवर्नमेंट किसी स्कीम्स रे पैसा दउची किसी स्कीम्स रे पॉलिटिकल हे पारे बट इकोनॉमी ये भी अच्छी सोसाइटी से माने स्टडी करिसेंती मानि नियो आमे आम इंडियन सोसाइटी स्टडी कराई स्टडी करी देखाला भाई इंडिया रो लोकंकर जोंटे कि अर्निंग बहुत कम अच्छी आ खर्च अधिक होची तांगोटी को फाइनेंशियल हेल्प दे देबा तो सही स्टडी अनुसार सोसाइटी को स्टडी करा गला स्टडी अनुसार एठी इम्प्लीमेंट होची पॉलिसी तो सही भलिया बेसिकली ये थिला या पर थिंकर्स कौन व्यूज सो अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल हु वाज ए नियोक्लासिकल इकोनॉमिस्ट so economics is the study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of the individuals and social action which is most closely connected with the use and attainment of the material requisite of well-beings. So Alfred Marshall कहथिले जे कि गोटे नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स कह जाए so economics is a study of mankind in the ordinary business of life. Basically economics माने कोन mankind को स्टडी करिवा जेमिति
आम गोटे बिजनेस करिया जाऊँ या आम गोटे एरिया रे किसी गोटे बिजनेस एस्टाब्लिशमेंट करिया जाऊँ आम देखियो कि से एरिया मेन काइंड केमती अच्छा बिहेवियर कौन ताकर लेट से मु आचार्य बारे गोटे रेस्टोरेंट जड़े खोल सी देखियो कि एरियाटा स्टूडेंट एरिया चली पारे लेट से आउ गोटे लोक सी कौटी दूर खोलिया जाऊँ जगह से अवेलेबल सस्ता भाव खोलीदेव बट सेठी लोक बिहेवियर अलग तो से भाया बेसिकली सी कहते सोशल एक्शन सो मैनकाइंड जोटा कि कहले इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ द लाइन तो तुम स्टडी करिवो मैनकाइंड रो केमिति बिहेवियर कोन स्टडी करिवो एंड इट एग्जामिन इकोनॉमिक्स कथा कहू एंड इट एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन व्हिच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड with the use and attainment of material requisites of well-being. John Stuart Mill in 1844 defines the subject of economics in a social context as the science which trace the laws of such of the phenomena of the society as raised from the combined operations of mankind for the production of wealth in so far as those phenomena are not modified by the pursuit of any other object. So basically Stuart Mill kon कहले economics in a social context कहले कारण the science which traces the laws of such of the phenomena of society as arise from the combined operation of mankind for the production of wealth. से कहले जहाँ भी गोटे लेट से गोटे एज्यूम कर एठी गोटे ट्राइबल सोसाइटी तांकर प्रोडक्शन अलगा तांकर फूडिंग हैबिट अलगा तांकर कल्चर अलगा तो सेठी जो प्रोडक्शन सही एरिया रो मैनकाइंड ऊपर डिपेंड करे so in the so far of those phenomena are not modified by the pursuit of any other objects या माने कहिया माने कोन लेट से आमर इन ओडिशा रो पखाळ भात खाइबा या पखाळ खाइबा ये आमर ट्रेडिशनल ये बट स्टिल देन आमर ओडिशा रो बहुत सारा अलग बिहेवियर फूडिंग पैटर्न भी आसिलानी पिज्जा हो बर्गर हो मोमोस हो ये सब आसिलानी बट स्टिल से माने मॉडिफाई हेना से प्रोडक्ट्स एबे भी अछि से आइडिया एबे भी अछि एवं से फेनोमेना स्टिल आम सोसाइटी परसिस्ट हो सेमथि ट्राइबल एरिया खास करके तुम देखिबो ताकर जो भलिया रीति रिवाज अछि या जो भलिया ताकर स्टाइल अछि से भलिया मेंटेन करी चलंती तो सी कहवा माने हला कोन इकोनॉमिक्स भी जोंडे कि कुसे सोशल कॉन्टेक्स्ट जोड़िले से कहले सोशल फेनोमेना या सोसाइटी डिसाइड करिवो कोन भलिया इकोनॉमिक एक्टिविटी गोटे पर्टिकुलर एरिया रा चलिवो सिमिलरली एसी पिगो economic study that part of social welfare which can be brought directly or indirectly into relationship with the measuring rod of the money. Here, instead of taking individualistic need and concern, he is concerned with the society as a whole, which is the basis of the subject of sociology. So basically ये कौन कहाँ पर फोकस देले सोशल वेलफेयर माने इंडिविजुअल रो की ओवरऑल सोसाइटी रो ओके so basically see instead of taking individualistic need or concern he is concerned more with society as a whole which is the basis of subject of sociology. Max Weber भी सेमती कहले Max Weber defines sociology as the science which attempts the interpretative understanding of social action in order thereby to arrive at a causal explanation of its cause and effect. So basically कौन social action रा कहीं की हला एमती काना पाई हला सोसाइटी एमती कौन पाई होची basically cause and effect relation माने कौन logical ही था दरकार which is commonly found in economics and various policies related to it. जेतले आमे सोशल एक्शन माने से कोन कहले कॉज एंड इफेक्ट जेते कॉज एंड इफेक्ट देखिए हला इकोनॉमिक्स रो पार्ट था तो सेथि पई इकोनॉमिक्स एंड वेरियस पॉलिसी रिलेटेड टू इट ये आसु सो ये थिला किछि थिंकर्स रो व्यूज था तुम एते गोडा से थिंकर्स रो व्यू लेखिया दरकार नहीं इंट्रोडक्शन देबो गोटे दिटा थिंकर्स में बड़ थिंकर्स रो दे देबो देन देखिबा सिमिलरिटीज
between sociology and economics. Both sociology and economics are branches of social science that deals with study of overall human development. Sociology and economics both use scientific method for studying their respective area of interest. Very important. Scientific method. Economics and sociology are dependent on each other for their study. Economics, as it is mainly concerned with man's economy aspect, is also directly correlated to the society's social activities. Similarly, sociology is concerned with study of beings, study of social beings. Economic factor highly impact it. So, economics is considered a branch of social science, and as a discipline, it's considered as a branch of sociology. बुझीगला कौन कौन सिमिलारिटी अच्छी कौन कौन तांको भीतर थिंकर्स व्यूज अच्छी एवं तार डेफिनेशन कौन सो कनक्लूड करिया यदि इकोनॉमिक्स इज all about the economy life of human being, whereas sociology is a study of society as a whole with the inclusion of economy life of man as a part of this wide branch of new social science, such as the belief system of the particular society, the culture, traditions, political and legal matter concerned, and many other knowledge dealing with the social aspect. बुझे पर्यंत. So despite these different, both sociology and economics has a branches of social science is interdependent on each other, and in fact it is due to this difference that makes the two interdependent helping society and develop and prosper. So एमाने society को help कर develop and prosper. बुझीगला. So conclude करिवो ये थिला तार व्यू पॉइंट ऑफ थिंकर नदेले चलियो तो एते मार्क रो आसुनी 20 मार्क आसी 15 मार्क आसी व्यू पॉइंट थिंकर नदेले चले गोटे अदर थिंकर्स रो कोट्स टा छाडी देले एटा हे जो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेटिव एंड पॉजिटिविस्ट सोशियोलॉजी. Difference between interpretative and positivist sociology. मैक्स एवर थिले इंटरप्रिटेटिव आउ मैक्स एवर थिले इंटरप्रिटेटिव आउ अगस्ट कम्ट हेले पॉजिटिविस्ट.
पॉजिटिविस्ट कौन बिलीव करे सोसाइटी सेव द इंडिविजुअल ये बिलीव करे सोसाइटी इंडिविजुअल को सेव करती एंड यूज क्वांटिटेटिव मेथड्स of interpretivist believe in individuals shape society and use qualitative material तामाने पॉजिटिविस्ट जो कम्प्ट कहले क्या चेंज कर सोसाइटी चेंज कर दो इंडिविजुअल को so then positivist देखिए it has its origin in the natural science human beings can be researched in the same way as the natural phenomena it is possible to conduct research it is possible to conduct research with objectivity discovery of what is true is possible Marsh and Stoker in 2002 so research must explain and predict society as a whole is of interest that is bigger picture there is no positivism there is no single truth but rather there are truth or interpretation of truth meanings are important and socially constructed meanings are important and socially constructed hence the same phenomena may have a multiple interpretation given different extent and the interpretation the social actors define actions Karl Marx Stoker then Alessandrin in 2012 and Babi 1998 then individuals as social actors are of a very importance so आमे देखिले positivism ये यारी ऊपर कही discovery of what is true is possible then non positivist so in other word non positivist approach focuses on meaning making experience contexts forms of interpretation while a positivist approach values objectivity above all a non-positivist considered the researcher as an actor with values through which interpretation happens, while positivist approach maintains that values and biases researchers must be set aside when conducting research. This is very important. Non-positivist. What do you mean by value objectivity? तमाने एटा टार्गेटेड माने कौन स्टडी करवा अचीव कौन करिया आगे गोल सेट हो जाइथियो सही ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंगली से माने जिबे
ता छड़ा आउ किसी हेले आसीबानी बट एठी एठी बेसिकली भाई भतीजा बात जहार थिबो चिन्हा जणा जहार थिबो से हेमती सो नॉन पॉजिटिविस्ट कंसीडर्ड द रिसर्चर एज एन एक्टर with values through which interpretation happens, while positivist approach maintain that value and bias of the researcher must be set aside. जेतले रिसर्च कराउची consequently the two viewpoints are opposite of one another and will result in a different approach to research, including the general focus of research and choice of methodologies to conduct research. Next question, what is reliability and validity? Critically examine its importance in sociological research. So reliability and validity, this is very important questions आसीबारे very important part एटा सिलेबस देखिबे एठी देखो सिलेबस सब जेमती तुम की रो थिबो माने तुमरो टिप ऑफ द फिंगर रो थिबो सिलेबस सब बळे सेकंड यूनिट रो थिबो रिलायबिलिटी थर्ड हां थर्ड रो थिबो एट कोन थिबो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी So reliability and validity are the two important parameters that determine the correctness and effectiveness of observation. Observation करला परे तार इफेक्टिव केते ठीक अछि केते भूल अछि केते एक्यूरेट अछि so both are two major challenges in sociology as the environment of the social experiment the society is not controlled कहना कोंटी कोन केते reliable but not valid these data धर पाइले reliable but valid no गोटे जगह सब चाहिए valid but not reliable valid माने सबू जगह आम डाटा कलेक्शन कले गोटे पर्टिकुलर जगह डाटा कलेक्शन करते neither reliable nor valid neither reliable not valid and this is both reliable and as well as valid देखियो आप देखिए जानियो सब देखियो reliability रिपीटेशन ऑफ द सेम रिजल्ट तुम जो रिजल्ट पाइबो गोटे जगह रिपीटेड होबा दरकार सेटा कहला को रिलायबल ता माने तुम ठीक अछि पाखापाखि तुम जो रिजल्ट बाहर करिच आमे एते थर टेस्ट कले ऑब्जर्व कले सब थर सेम मझिरे आसुची ता माने
लेट से एटा यारी पाखापाखि जदि सब रिजल्ट आसूची तामाने वी कैन रिलाई ऑन इट डाटा उपरे रिलाई करि परिबे भरोसा करि परिबे सो टाइप्स दी प्रकार जोटा टेम्पोरल रिलायबिलिटी और गोटे कंपैटिबिलिटी कंपैरेटिव रिलायबिलिटी एग्जांपल ऑफ रिसर्च मेथड विथ हाई रिलायबिलिटी कौन ना सैंपलिंग सर्वे दीज आर हाई रिलायबिलिटी एथर अछि high reliability then validity the extent to which an instrument measures what it is supposed to measure ये reliability है कौन ना reputation of the result validity कौन ना extent to which an instrument measures what is it supposed to measure degree of achieving the intended result बेसिकली या ऊपर डिसाइड करा जाए माने ऑलरेडी आम मानिचु धर जो ऑब्जर्वेशन हुए ऑब्जर्वेशन पूर्व आम पाखे गोटे हाइपोथेसिस थाए हाइपोथेसिस कौन कि गोटे जगह स्टडी कर जान एज्यूम कर कि ओडिशा को जन स्टडी कर आसो ता पाखे ये हाइपोथेसिस थी कि ओडिशार लोक मेजोरिटी कोस्टाल एरिया रे पखाड़ खाती ये माइंडसेट कर आसो तो हाइपोथेसिस कौन जो डाटा सी पाई जो इनफॉरमेशन सी पाई लोक पाखु जे 50% या 60% लोक पखाड़ खाती दिन में या राति पखाड़ खाती जहाँ भी इनफॉरमेशन कलेक्ट कला तो तुम टार्गेट कौन बर्तमान जहाँ भी इनफॉरमेशन अच्छी ताकू जदि वैलिडेट कल सेटा हला वैलिडिटी ऑलरेडी जो हाइपोथेसिस अच्छी ता जदि पाखापाखि गल डिग्री ऑफ अचीविंग द इंटेंडेड रिजल्ट बुझल वैलिडिटी मीन्स डिग्री ऑफ अचीविंग द इंटेंडेड जो रिजल्ट चाहूच तुम्हें जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर जदि सेही रिजल्ट मिलगला ता माने एटा वैलिडेट करि हो से कथाटी कहा होची so importance of the reliability validity to produce useful result gives more legitimacy to quantitative analysis very important quantitative analysis हम देखियो आगो makes sociology as a positive science makes sociology as a positive science and positivism claims reliability and validity and further subjective analysis in the sociology. So these are basically importance of the reliability and validity. Concern करना reliability and validity cannot be tested as there is a little scope for controlled experimentation in the social dimension. जोटा गोटे कथा एबे कहली कि आमे गोटे सुनिके आसछु शुणिक आम से हाइपोथेसिस उपर तारी डायरेक्शन सब माइंडसेट रही कि आम पाखापाखि 60% लोक यह खाऊे यह कंज्यूम करते तो से अनुसार आम थट्स प्रोसेस प्रथम सी होगा माने बायसनेस टी रहीगला थट्स तो ये कौन कौन ना ये बेसिकली जो जो आम रिजल्ट पाइलु ता पछे ताकू बैकअप करने भैलीडेट करने किसी आउ ना आम पाखे आम अलरेडी गोटे थियोरी शुणी जो हाइपोथेसिस कहूँ से हाइपोथेसिस जब भैलीडेट है भैलीडेट कर दौर बट आमे जो चेक कलु जो हाइपोथेसिस बेस रे करू से हाइपोथेसिस भूल भी हो पारे से हाइपोथेसिस रे आम मैच भी करीगला बट जरूरी नुहे जो मैच कला आमर सीटा ठीक अच्छे कि भूल अच्छे किए देखिए बुझे ना आम पर जेटा एग्जामिन कले से ठीक अच्छे कि भूल अच्छे किए जापर तो दैट इज द रीजन वाई ये बेसिकली कराऊँ कौन cannot be tested there is a little scope of controlled experimentation in the social domain then Marxist feminist and subaltern perspectives criticize it by saying that reliable and valid sociological research are nothing trying to advocate status quo in the society obviously status quo माने जहाँ अच्छी से ट्राई कर this is a very important point
सो एमाने कौन कहले सोसाइटी रे जहाँ अच्छी मानि मु जोटा कथा कहली से शुणिक आसी हाइपोथेसिस से हाइपोथेसिस मैच करने करुच्ची नुआ किसी करूना तामाने दे वांटेड टू मेंटेन द स्टेटस को लेट्स से एज्यूम कले से माने कास्ट सिस्टम कथा से देखले कि पर्टिकुलर कास्ट ओडिशा रे जो अच्छी तांको सहित डिस्क्रिमिनेशन होची माइंड मेंटली से रेडी होके आसली कि डिस्क्रिमिनेशन होची देन सही अनुसार से माने सही डाटा अनुसार मैच करिया ट्राई करी जदि मैच करी गला ताले रिलायबल सोर्सेस या वैलिडेट कले ताको तामाने इटा स्टेटस को मेंटेन करी चाहूची एठी किछि चेंजेस करी चाहूनी then obsession with reliability and validity might incentivize the researcher to spend their time accumulating and manipulating data to claim validity obsession माने कौन आमको सब ट्राई करवा एमाने सब ट्राई करिवे ना कि जो आम इनफॉरमेशन शुणिकी आसू ताकू पाखापाखि रिजल्ट को पहुँचा भैलिडेट करने चाहिए से जिनस ऑब्सेशन तो सेमती हेल्ले कौन हम मैनिपुलेट करेंगे से डाटा चेंज करदे कि भाई पाखापाखि हो सेटिंग कर दियो ये भाया चक्कर एमती हो पारे सो इंटरप्रेटिविस्ट डिनाई द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग साइंटिफिक मेथड इन सोशियोलॉजी इंटरप्रेटिविस्ट माने किए मैक्स वेबर से माने कहले कि साइंटिफिक मेथड को यूज करवा इन सोशियोलॉजी रे एवं तापर वैलिडिटी चेक करवा सेटा ठीक नुह सेटा को डिनाई कले एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी कैप्चर यूजिंग एनी मेथड आउ गोटे देखा कि मान नियो तुम्हें 10टा लोक पचार एवं 10टा लोक गोटे कथा कहले काली तुम्हें पचार सी अलग कथा कहे तो तुम्हें माइंड को केमती कैप्चर कर बुझल नहीं आम इवेन तुम्हें देखी जो बारंबार ये आमर एग्जिट पोल वगैरह हो इलेक्शन में बहुत थर एग्जिट पोल भी भूल हो जाऊँगी कहीं से लोक पचारे से दे पारे न दे पारे से भूल भी कर पारे आउ कौन ना ह्यूमन बिहेवियर पर्टिकुलर से किसी जगह किसी अल्प अल्प डाटा आनिक से एग्जिट पोल बाहर कर दूसरी बड़ डाटा सहित ये करके मैच करके वैलिडेट करने चाहूँगी आने केमी वैलिडेट करती माहौल देखती से देखले कि माहौल यही पार्टी सपोर्टर अच्छी तो एग्जिट पोल से ही पार्टी सपोर्टर ही देखाती बुझला नहीं तो दैट इज द रीजन व्हाई बेसिकली एमाने इंटरप्रेटिविस्ट माने कौन कहले भाई ये तो चांसेस अच्छी ये मैंने ये हबार आठी साइंटिफिक मेथड स्टडी करी हेनी ह्यूमन बिहेवियर को केमती करि मनीष आज अच्छी काली आगे कौन बिहेवियर कर यू नेवर नो सो दीज आर बेसिकली क्रिटिसिजम अच्छी तार इंपोर्टेंस यार मेन बॉडी आम देखिए इंट्रोडक्शन and then देखिए lastly conclusion Lincoln and Gowa सी कहते कौन ना टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी अल्टरनेटिव टर्म्स लाइक ट्रस्टवर्थीनेस क्रेडिबिलिटी ट्रांसफरेबिलिटी एंड कन्फर्मेबिलिटी कैन बी यूज्ड टू स्वीट द नेचर ऑफ रिसर्च sociology should focus on relevance of the research by looking beyond the reliability and validity ये अपने डिबेट करा जाय परियो ये हमर्सली कहते सो ये थिला रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी यही भाया तुम लिखि पारिबो then what do you understand by content analysis what do you understand by content analysis discuss कंटेंट को एनालिसिस करिवा इट इज आल्सो
सोशियोलॉजी स्टडी रे गोटे रिसर्च टूल एटा गोटे कि आम पाखे कंटेंट अवेलेबल अच्छी केमती एनालिसिस करवा डाटा अवेलेबल अच्छी केमती एनालिसिस कर इट इज ए रिसर्च टूल यूज टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन वर्ड्स themes or concept within some given qualitative data कहली जोटा कि डाटा को सी एनालिसिस करिवे जेमिति मो जो कहली तुमको एग्जिट पुल कथा से कौन हुए डाटा को एनालिसिस कर से माने लोकंकर वर्ड को नहीं आसे लोक कौन कहले या तांकर कॉन्सेप्ट को आनिले चार पांचटा क्वेश्चंस पचारे पचारि पाला से डाटा बेस्ड से माने पूरा होल गोटे पिक्चर क्रिएट कले राइट तामाने कौन कंटेंट को से माने एनालिसिस कर सेम वे ये है कंटेंट सो कंटेंट एनालिसिस द यूजिंग कंटेंट एनालिसिस रिसर्चर कैन क्वांटिफाई एनालाइज द प्रेजेंस मीनिंग्स एंड रिलेशनशिप ऑफ सच सर्टेन वर्ड्स थीम्स एंड कॉन्सेप्ट को से माने एनालाइज करि परिबे एज एन एग्जांपल रिसर्चर कैन इवैल्यूएट लैंग्वेज यूज्ड within a news article to search for the bias or partiality इवैल्यूएट लैंग्वेज गोटे न्यूज आर्टिकल रो गोटे लैंग्वेज यूज केते थर कराई छी गोटे लैंग्वेज पर्टिकुलर लैंग्वेज को विदिन ए न्यूज आर्टिकल टू सर्च फॉर द बायस और पार्शियलिटी जोंटे कि जेमती आमे किछि किछि न्यूज पेपर देखु जेमती आमे हिंदू देखु हिंदू न्यूज पेपर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर देखु आमे भाबु कि ये लेफ्टिस्ट अछि ए माने सरकार एग्नेस्ट लिखुथिबे तो बेसिकली तार से न्यूज आर्टिकल आमे जानि परिबा कि कहा एग्नेस्ट लिखुछथि कहा सपोर्ट लिखुछथि एवं सेठी जानि परिबा बायसनेस अछि या न्यूट्रल अछि सो थ्री डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ कंटेंट एनालिसिस जोटा कि देखिबा फर्स्ट हला कोन ना एनी टेक्निक्स फॉर मेकिंग इंटरफेस any techniques for making interference by systematically and objectively identifying special characteristics of messages ये हॉल्स्टी कहते 1968 any technique for making inference any technique for making लेकिन ये by systematically and objectively identifying the special characteristics of the messages आउ गोटे डेफिनेशन थिला कोन it is an interpretative and naturalistic approach it is both observational and narrative in nature and relies less on the experimental elements normally associated with scientific research reliability validity and generalizability एथर आसला कोंटी ना फ्रॉम एथनोग्राफी ऑब्जर्वेशनल रिसर्च एंड नैरेटिव इंक्वायरी 1994 2012 भितर सो ये कंटेंट एनालिसिस कौन कहूँ ना इंटरप्रिटेटिव एंड एज वेल एज नेचुरलिस्टिक एंड आउ कौन कही ना बोथ बेसिकली it is both observational and as a narrative in nature and relies less on experimental elements experimental element रो ये rely कम करे जोटा कि scientific research ऊपर depend करे then third definition a research technique content analysis a research technique for the object systematic and quantitative description of the manifest content of the communications from Berelson बेसिकली सबुथिरे जहाँ भी करो ये डाटा ओरिएंटेड तुमर थिबो
So these are definition of content analysis. Content analysis use करके हमें कौन लिखि परिबा quantify करि परिबा analyzing the presence meanings and relationship of such certain words themes and concepts. Uses of content analysis. Identify the intentions, focus or communication trends of an individual, group or institutions. Describe attitudinal and behavioral response to communications. So user can identify the intentions or focus or communication trend of an individual or groups or institution. Describe the attitudinal and behavioral response to communications. Determine the psychological or emotional states of a persons or groups. Reveals international difference in communication content. Reveal patterns in the communication content. Pre-test and improve an intervention or survey prior to lunch. Analyze focus group, interview and open-ended questions to complement quantitative data. To complement the quantitative. So here uses like content analysis. माने कम्प्लीमेंट माने कंटेंट एनालिसिस करनेला परे से पचारे जाएगी किसी लोग जाए इंटरव्यू पचारे मैच करेंगे कि ठीक अच्छे ना नहीं. सिमिलारली ओपन एंडेड क्वेश्चंस किसी क्वेश्चन दी चार्टा एमती क्वेश्चंस पचार देले कि ये जो डाटा मिली ये डाटा ठीक अच्छे ना नहीं भूल अच्छी तो जना पड़ जाए. सो दैट कंटेंट एनालिसिस को कम्प्लीमेंट करे हेल्प करे कि ये कंटेंट एनालिसिस जो है जो डाटा आम पाखे एम कौन कर किसी ऑलरेडी डाटा अच्छी एनालिसिस कर बट इंटरव्यू वाला माने जो ओपन एंडेड क्वेश्चन हो इंटरव्यू हो ये कौन करेंगे आम जाए पचारे ये डाटा को जो निहाई से डाटा ठीक अच्छे ना नहीं. So then देखिए types of content analysis. There are basically two general types of content analysis. गोटे है conceptual analysis और गोटे है relational analysis. Conceptual analysis और गोटे है relational analysis. The conceptual analysis determine the existence and frequency of concepts in the text. Relational analysis develops the conceptual analysis further by examining the relationship among the concept in a text. Basically कौन देखियो से conceptual analysis से determine करियो कौन existence and frequency of the concept in a text और relational कौन तांको भितर जो relation कौन थियो. Basically relational analysis is not different. Basically within the conceptual analysis develops the conceptual analysis further by examining the relationship among the concept in a questions. एठी कौन केते टाइम फ्रिक्वेंसी ऑफ कॉन्सेप्ट केते थर यूज हेछि कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस रे तार एक्जिस्टेंस एंड तार फ्रिक्वेंसी एवं सेई जो बारंबार एक्जिस्टेंस हेछि या बारंबार गोटे पर्टिकुलर टॉपिक को फ्रिक्वेंसी रे अछि ता भीतर रिलेशन कोन सेटाला रिलेशनल एनालिसिस. ईच टाइप ऑफ एनालिसिस may lead to different result, conclusion, interpretations and meaning. Obviously अलग अलग हबो result. First देखिए conceptual analysis. Typically people think of conceptual analysis when they think of content analysis. In conceptual analysis, a concept is chosen for examination and analysis involve quantifying and counting its presence. The main goal is to examine the occurrence of the selected terms in the data, and terms may be explicit or implicit. आम एनालिसिस करने आगे कॉन्सेप्ट ही एनालिसिस कॉन्सेप्ट एनालिसिस माने कौन लेट से तुमको जो इलेक्शन कथा दूसरी इजिली बुझीपर लोकों पाक गले डाटा कलेक्शन करके आनले कंटेंट एनालिसिस हम कौटी स्टूडियो बसिक डाटा कलेक्शन टीम अलग स्टूडियो को आसी पलि आसले सेठी मेन एम कौन क्या भोट देच कॉन्सेप्ट कौन गोटे
सो कॉन्सेप्ट चूज करागला से जो चूज करागला कॉन्सेप्ट देन ताकू क्वांटिफाई करे केते जण हां कहचंदी केते जण ना कहचंदी केते जण या सपोर्ट केते जण ना ताकू क्वांटिफाई करागला एवं ताकू काउंटिंग करागला तार प्रेजेंस को से कॉन्सेप्ट को तो एठी देखा जीवो कि मेन गोल कोन तो एग्जामिन करियो जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कथा हम कहै कि की जितिबो की हारिबो सेईटाकू केते थर एकरेंस होईची तार एवं सेई अनुसार सेटा को से कॉन्सेप्ट एक्सप्लिसिट हेई पारे या इम्प्लिसिट हेई पारे माने कोन लेट्स से कहि देबी जानि परियो गोटे हला एक्सप्लिसिट तुमे को पार्टी को वोट देइछो बुझला येला एक्सप्लिसिट से कहि दो मु ए पार्टी को देजी या बी पार्टी को देजी आ गोटे हला कोन तुमे को नेता तुमको भल लागंती बुझल नहीं को पार्टी भाई किसी ना चार्टा ऑप्शन दे दिया जीवो से गोटे ऑप्शन चूज कर देबे लोक जानि जिवे इम्प्लिसिटली तामाने से एडी याको वोट देइछि कहबे मु कहबे मु पचारु कि तुम काहा को वोट दोजो तुम ये चार जन के भीतर काहा को भल लागे ये इम्प्लिसिटली कॉन्सेप्ट टुवर्ड्स कॉन्सेप्ट आडू से माने जाउछंती सो ए जिंस कथा एठी मैं बुझी पारे सो एक्सप्लिसिट टर्म्स आर इजी टू आइडेंटिफाई जोंटा कि मु कहली एबे and codifying coding of implicit terms is more complicated. You need to decide the level of implication जोटा कि मु एबे जो एग्जांपल देली सेटा को जो देखिबो हेई पारे जने नेता भलै पारि बट ताकू वोट देथि बोली किछि माने नै बुझिबला नै तो सेठी इम्प्लिसिट सेइथ में कॉम्प्लिकेटेड हो जाए सो यू नीड टू डिसाइड द लेवल ऑफ इम्प्लिकेशन एंड बेस जजमेंट ऑन सब्जेक्टिविटी एठी अछि इशू ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इशूटा अछि एठी तुमे तापर रिलाय करि परिबोनी तुमे एई बेस एई इम्प्लिसिट डाटा रे तुमे माने जस्टिफाई करि परिबोनी वैलिडेट करि परिबोनी कि सतरे से वोट देथिबो एई बेसिस रे या नो यू नेवर नो सो देयरफॉर कोडिंग ऑफ इम्प्लिसिट टर्म्स इन्वॉल्व यूजिंग डिक्शनरी और contextual translation rules or both. So to begin a conceptual content analysis, first identify the research questions and choose a sample and samples of the analysis. Content analysis माने सब माइंड रखथु कोन डाटा थिबो सैंपल थिबो जोंटा कि मु कहिले जोंटा कि इलेक्शन कथा सही गोटी माइंड रख दे तुम इजी हो माने ये करिया पई एग्जाम रे लिखिया पई सैंपल समान नियंती पूरा ऑल ओवर इंडिया रे पाखा पकी 50 करोड़ 60 करोड़ लोग भोट दियंती से माने कलेक्शन डाटा कर थांती 15,000 या 1.5 लाख 2 लाख एमिति ता कंपैरिजन बहुत ही कम डाटा बट सेटा को कहा जाय सैंपल ए सैंपल्स को ही से माने एनालिसिस करंती नेक्स्ट द नेक्स्ट मस्ट बी कोडेड इनटू ए मैनेजेबल कंटेंट कैटेगरी डिफरेंट कैटेगरी रख दिबे ए बी सी अनडिसाइडेड वाला ये सब रखनी देखिन टीवी ये रे सही वाला जिंस so this is basically a process of selective reduction by reducing the text to a category and the researcher can focus on and code for a specific word or pattern that inform the research questions बुझला नहीं पूरा क्लियरली बुझ परछ नहीं so this is how concept mainly एटा ही यूज हुए conceptual analysis so then देखिबा relational analysis relational so relational analysis being like conceptual analysis where a concept is chosen for examination however the analysis involve exploring the relationship between concepts so basically कौन कहूची ये भी conceptual analysis होएगा बट सेठी जो concept चोला चूज जे खास करके implicit case रे ये जरूरी बेसी पड़े इम्प्लिसिट केस रे आमे देखियो कि जो से माने आंसर देई जंदी तांको भीतर रिलेशन कोन अछि जो मुझे कहली धर चारिटा ए बी सी डी चारिटा नेता चूज करले सी एठी गुटे आंसर देछि आ गुटे धर को नेता भल लागे देन आ गुटे जगह क्वेश्चंस पछे को सरकार भल लागे बुझबला नहीं तो से माने रिलेशन खोजिबे तो सेही रिलेशन को कहा होचे रिलेशनल एनालिसिस बेसिकली आउ किछि इथरा नाही तो एनालिसिस इन्वॉल्व एक्सप्लोरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्सेप्ट्स
Individual concepts are viewed as a having no inherent meaning, and rather the meaning is a product of the relationship among the concepts. So to begin a relational content analysis, first identify a research question and choose a sample and samples of for analysis. So the research question must be focused on the concept types are not open to interpretation and can be summarized. Next, select the next text. Select the text for analysis. Select text for analysis carefully by balancing having enough information for a thorough analysis. So results are not limited with having information that is too extensive, so that the coding process become too arduous or heavy to supply meaningful and worthwhile result. Basically एठी कहया माने हला कोन तमे जदि जानिबो कि जो जिनस आमे पढिथिले कन्सेप्चुअल इम्प्लिसिट पार्ट रे सेम जिनस एठी सेम जिनस आमे कन्सेप्ट गुडा आसिले ता कंटेंट आसिले ताको एनालिसिस कले ताको भीतर रिलेशन खोजिले एठी खाली एक्स्ट्रा गुटे हला कोन रिलेशन खोजिले आउ एठी किछि ना बाकी सेम जिनस एठी सेम. So advantage of content analysis, it directly examine the communication using text, allows for both qualitative and quantitative analysis. It provides valuable historical, cultural insights over time. It allows a closeness to data. Coded form of the text can be statistically analyzed. So basically directly and first important directly analyze the communication using text, allows for both qualitative and quantitative analysis we paribo, provides valuable historical and cultural insights over the time, allows closeness of to data. Coded form of the text can be statistically analyzed. Unobtrusive means of analysis interaction. It provides insight into complex modes of human thought and language use, जोटा कि ह्यूमन थॉट्स एंड लैंग्वेज को आमे कोडेड फॉर्म में यूज कर दो एठी yes or no ये सब फॉर्म व्हेन डन वेल इट इज कंसीडर एज रिलेटिवली एक्जाक्ट रिसर्च मेथड भी मध्य याकू कहा जाय जेते ठीक हुए एटा को. एंड कंटेंट एनालिसिस इज ए रैपिडली अंडरस्टूड and an inexpensive research method. Inexpensive majority cases रे inexpensive थाई कोन जण लोग पठांती सी गला घर घर बुझिला डाटा नहीं कि लेखि 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 पड़े आसला ताको रिसर्च कले आसिकी घर बसिकी. Inexpensive. A more powerful tool when combined with other research methods such as interviews, observation, use of archival records जो पुराना records कोन अछि. It is very useful for analyzing historical material, especially the documenting trend over the time. तो तुम्हें जो मु कथा कहिथि जो एग्जिट पुल कथा कहली डाटा कलेक्शन करंती से माने सब जिनस करंती इंटरव्यू करंती ऑब्जर्वेशन भी करंती पुराना डाटा भी से कलेक्ट देखंती कि आगु एथ्रो किए जीति थिला काहा को वोट देइथिले ये सब इन्फॉर्मेशन देले गोटे कंक्रीट रिजल्ट बाहरिबो. सो खाली कंटेंट एनालिसिस सिटिंग एट होम विल नॉट वर्क. कंटेंट एनालिसिस सहित तुम इंटरव्यू को भी ऐड करिवो, क्वेश्चन को ऐड करिवो, तुमरो आर्काइवल रेकॉर्ड्स माने पुराना रेकॉर्ड्स को भी यूज करिवो, देन ओनली कंटेंट एनालिसिस हेल्प करिवो. बेसिकली खाली कंटेंट एनालिसिस तुमको हेल्प करिवोनी कि बेटर रिजल्ट पाइबा पई. तो ये थिला तुमरो कंटेंट एनालिसिस वेरी इंपोर्टेंट. कंटेंट एनालिसिस रो माने क्वेश्चंस तुमरो आसे एग्जाम रे एटा कंटेंट एनालिसिस एइथरे तुमे देखियो जे क्वेश्चनर हो, इंटरव्यू हो, ऑब्जर्वेशन. सो बेसिकली कंटेंट एनालिसिस देन कंटेंट एनालिसिस पई दरकार कोन डाटा ताको एनालिसिस करिया. सो डाटा को बेसिकली ऑब्जर्व करि परिबो कोन भलिया डाटा कलेक्शन करि आनी परिबो. डाटा बेस्डली थ्रू ऑब्जर्वेशन भी डाटा आनी परिबो, डाटा थ्रू इंटरव्यू नै आनी परिबो, डाटा थ्रू क्वेश्चंस पचारि या गोटे केस स्टडी करी ये सब डाटा आनिबा देन सिंपली से जो डाटा आनिले से डाटाटा रिलायबल अछि ना वैलिड अछि ये सब बेसिकली दीज आर ऑल इंटरलिंक्ड अछि. खास करके एटा छाडी देले ये दीटा पार्ट इंटरलिंक कने ये दीटा पार्ट कोन ना केमिति स्टडी करिवा सोसाइटी को. ये कोन सोसाइटी सोशियोलॉजी केमिति एमर्ज हला, ये कोन ना साइंटिफिक स्टडी करिवा सोशियोलॉजी
साइंटिफिक स्टडी जो करवा केमिति करवा बुझला नहीं सो ये तीनटा टॉपिक्स या देन तापर थिंकर्स पार्ट आसीबो एति थाओ जी।